Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and yes, here we are with the advanced level of spoken English course. In quick bites, we are going to discuss the types of shoes for men. Yes guys, you wear a lot of shoes, you love shoes, and abhi to you wear most like sneakers and maybe loafers and all, but as you'll grow up, and if you already are a grown up, so you are wearing a lot of formal shoes as well. So ये जो formal shoes आप पहनते हो या boots पहनते हो, इन सबके एक नाम होते हैं, and that is very important for us to remember. Why? Because उससे ही समझ में आता है that the man knows his stuff. So if you are a man or if you are a woman who wants to buy something really chic for the person, for the special person, so you need to know this. And if nothing guys, you have to have this information. So let's start with the video. Now these are derby shoes. Basically derby shoes are formal shoes, extremely formal shoes. ये अपने आप में एक umbrella category है जिसके अंदर में you have got different types of shoes. Okay, so just remember this thing कि जितने भी आपके formal shoes होते हैं जो थोड़े से pointed होते हैं आगे से, so these are known as derby shoes. ठीक है, like they are ornamentalized, मतलब थोड़ा सा embellished भी हो सकते हैं या फिर उसमें कुछ कलाकारी होती है. So जैसे ये जो derby shoes होते हैं, and then इस derby shoes के अंदर you have the Oxford or the Brooks. So what are these Oxford shoes? Extremely formal, very basic design. These are Oxford shoes. ठीक है? And if you will see the Brooks, so here you will see these tiny holes. तो ये जो tiny holes है ना, इसको ornament करने के लिए बनाया जाता है, so that your shoe looks a little like party wear or extremely different और थोड़ा सा elated types. So derby shoes में you have Oxford and Brooks, and these are again extremely comfortable because you are supposed to wear them for a very long time. So these are very comfortable, but this is a little more designer and this is a little more subtle. Okay, then here you have saddle shoes. So we have already discussed the word saddle. Saddle क्या होता है? जैसे आप घोड़े पे अगर सवारी कर रहे हो तो घोड़े के ऊपर एक लेदर का एक पूरा जो कपड़ा होता है, और यू कैन से एक लेदर का पीस होता है जिसपे यू सिट एक्चुअली, तो उसको सैडल कहते हैं. सिमिलरली यू कैन सी तो दिस पर्टिकुलर लेदर पैच इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ सैडल, दैट्स व्हाई these shoes are known as saddle shoes. Then here we have moccasins. Now what is the difference between moccasins and loafers? So they both are very easy to wear, slip-ons होते हैं, लेकिन loafers are flat. Loafers जो होते हैं flat होते हैं, very comfortable. Moccasins they have a specific sole to it. उसमें ना बहुत मतलब they look designer और इनमें एक hard sole होता है. So moccasins और loafers में ये difference है. Then we have sneakers. We all know what are sneakers. Then these are boats. अब boats में और जो basic slip-ons होते हैं, मतलब normal जो shoe होते हैं जिसमें बस पैर डालो और बात खत्म, उसमें difference सिर्फ इतना है that boats में you have got these laces. Slip-ons में laces नहीं होते. Then you have espadrilles. So espadrilles are basically you can see that इसमें नीचे ना ये weaving होती है. Okay, ये नीचे जो होती है ना ये weaving होती है. So these kind of shoes are known as espadrilles. Then here we have sandals, basic sandals. Then you have slip-ons. So what is the difference between slip-on and boat? Boat में laces होते हैं, slip-ons में you don't have laces. Then here we have the basic slippers. बहुत सारे लोग इसे स्लीपर्स कहते हैं, मेरे स्लीपर्स नहीं मिल जाए गाइज, इट्स नॉट स्लीपर, इट इज स्लिपर. ओके, नेक्स्ट वी हैव चेल्सी बोट्स. सो चेल्सी बोट्स आर बेसिकली अ लिटिल फॉर्मल, सेमी फॉर्मल. ठीक है, हाई एंकल जो होते हैं इनको आप चेल्सी बूट्स बोलते हो. देन हियर वी हैव चुका बूट्स एंड दीज आर योर क्रॉक्स, वेरी कंफर्टेबल, राइट? Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, सो उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है. एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.